So whenever you are analyzing the power sector, first thing you have to look at is the only way the company can make an earning is the capacity payment. It cannot make an earning through generating more electricity or less electricity. Whether it is based on coal, gas, wind, solar, or nuclear doesn't matter. At the end of the day, the amount of capital it has invested in that power plant, they will get a capacity payment based on that amount. Assalamu alaikum, Rehman bhai. Walaikum salam. Thank you very much for your time again. Rehman bhai, what are the fundamental factors and key risks associated with investing in Pakistan's power sector? Okay, thank you, Fazal bhai. It's always a pleasure to talk to you. And as I say, when you're investing in any company, first you have to understand from where does its earnings come from. So in the power sector, Pakistan's model is such that the government operates single buyer model. Single buyer model means whatever the cost of generating electricity, the power plant will sell to the government at that cost. It can't make a profit, it can't make a loss on the generation side. But because it has invested a certain amount of capital, it will get a fixed payment which will cover its debt repayments as well as the equities it has invested. So that is called capacity payments in our familiar capital market terms. So whenever you are analyzing the power sector, first thing you have to look at is the only way the company can make an earning is the capacity payment. It cannot make an earning through generating more electricity or less electricity. Whether it is based on coal, gas, wind, solar, or nuclear doesn't matter. At the end of the day, the amount of capital it has invested in that power plant, they will get a capacity payment based on that amount. So that is the basic understanding of Pakistan's power sector. And then when we come to the listed space, there are quite a few options. Almost, I think, 10 to 12 companies. Most of them actually fall under the Power Policy 2002, and most of these plants are around 200 megawatts. So most of the power plants installed in Pakistan range from $0.8 million per megawatt to $1.5 million per megawatt. So the cost of these plants is more or less around $200 million. Most of the listed companies. So from that you can estimate what is their capacity. Now, because the government has given a sovereign guarantee, you can assume that government will pay at the end of the day. They might pay less in 1 year, they might pay a bit more in the second year, but after a few years, whatever the payments that the government has promised, the company will get that. So you can use that metric as a potential of earning capacity. And then when we deep down further into the sector, we'll see when it comes to the capital markets, because people cannot get access to the assets, they are only a minority shareholder. So the price of these companies fluctuates or is determined more by what the minority shareholder is getting. So then the dividend policy actually becomes really important. So these are two aspects. One is how much is the company earning, and the second is what is its payout towards its minority shareholders, which is reflected in the its stock price at any given point. Thank you, Rehman bhai. Rehman bhai, what's the difference between old and new projects or plants? So this happened in 2020 and 2021. There was a renegotiation with almost all IPPs except the 2015 policy IPPs, because the one installed pre 2015, they had already paid back their debt. So the government agreed with them that your capacity payment, which was fixed in dollars, will now be calculated using dollar equals 168. So in a way, their capacity payment was no longer fixed in dollars, but was fixed in rupees.
That's the only difference. Other than that, the entire model is same. The newer IPPs still are repaying their debt, so their capacity payments includes a big portion of debt repayment. But the older IPPs, one, their capacity payment is fixed in rupees, the major portion, and it will not increase as the dollar further increases against rupee. That's the only difference. रहमान भाई कौन से जो इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो क्रिटिकल हैं आपके ख्याल में जब हम पावर सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो So like I said, with any company, with any sector, first thing is आप देखें कंपनी की earning capacity कितनी. So you can estimate that using the cost of the plant, the amount of equity which has been invested, और कंपनी को हर साल capacity payment कितनी मिल रही है. But like we said earlier, in the capital markets, जो stock की price चल रही होती है उसमें sentiment also prevails. उस वक्त market की conditions कैसी हैं, उस वक्त interest rates क्या चल रहे हैं, क्योंकि जितना भी dividend company pay out कर रही है वो more or less उसके साथ चल रहा होता है कि stock की dividend yield कितनी है, which has a link to the overall interest rates prevailing in the country. But over 3 to 4 years, if you are investing for 3 to 4 years, interest rates will keep changing. Thus, the sentiment will also keep changing. The two things which you can, which will guide you, which should be your pillars when you are investing. One is the earning power determined by capacity payments, and the other is willingness to pay dividend. For capacity payments, I always say it is the capacity to pay, क्योंकि ये पैसे कंपनी को किसी ना किसी दिन मिलेंगे. So the capacity to pay is there, but the second aspect is willingness to pay. Some sponsors are more what you call बड़े दिल वाले लोग होते हैं, वो ऑलमोस्ट ज़्यादा डिविडेंड देते हैं. कुछ लोगों की थोड़ी पॉलिसी होती है कि वो थोड़े पेसिमिस्टिक होते हैं, दे वांट टू होल्ड ऑन टू कैश एंड मे बी इन्वेस्ट इन अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. सो यू कैन ऑल्सो लुक एट that difference. Though companies earning the same capacity payment, same earnings might have different value in the stock market because they are paying out different dividends. रहमान भाई जो हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट है पाकिस्तान में ये पावर सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह इम्पैक्ट करता है फर्स्ट एस्पेक्ट इज इंटरेस्ट रेट्स. अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो कंपनीज जो डिविडेंड्स दे रही होंगी उनके डिविडेंड यील्ड के हिसाब से उनकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ जाती है. डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता बट मोर और लेस इम्पैक्ट आता है. द सेकंड एस्पेक्ट इज बिकॉज पाकिस्तान में एक सर्कुलर रेट का मसला है. सो पीपल थिंक कि इनकी कैपेसिटी पेमेंट तो आ रही है अकाउंट्स में इजीली, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बट आर दे एक्चुअली गेटिंग दैट कैपेसिटी पेमेंट. सो अगर बिजली के बिलों में डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा, द कॉस्ट एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग थ्रू बिल्स, और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो उनको कैश में नहीं मिल रहे. सो दैट इज द अदर एस्पेक्ट. आजकल पाकिस्तान में जैसे पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट बिजली के बिल्स पे क्रैकडाउन चल रहा है. सो दिस हैज़ बीन अ मेजर रीज़न कि लास्ट 1-2 महीने में पावर स्टॉक्स ने बहुत रैली की. People are expecting कि now the government is serious to collect these bills, and then when these bills are collected, ये payment eventually इन power producers को मिलेगी and they can actually pay out more dividends. So I think these are the two main aspects. One is circular debt, कि आपके जो earnings हैं are they cash earnings, or a good portion of them are getting stuck in receivables. That is one aspect, and the second aspect is interest rate, जिसके हिसाब से dividend yield determine होती है of that particular stock. सही सही रहमान भाई हमारे यहाँ अक्सर बहस होती रहती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को माइंड में रखें तो पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए शॉर्ट टर्म होनी चाहिए एंड व्हाई I think long term, though, I don't think it would be the best option. Best investment option is medium term. कुछ सालों का वेट करें जब थोड़े डिविडेंड्स कम हो जाए, सर्कुलर रेट का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाए, देन दीज कंपनीज इनकी अर्निंग्स आ रही होंगी, इनके रिसीवेबल्स बढ़ रहे होंगे, बट प्राइस बहुत कम हो, क्योंकि लास्ट 1-2 साल में डिविडेंड नहीं दिया हो. People will be thinking, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा डिटेल में फॉलो नहीं करते. पीपल विल बी थिंकिंग के लास्ट साल में से 5 रुपये डिविडेंड दिया, उससे पहले 4 रुपये दिया था, तो इस साल भी 6 रुपये दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा. बट बिकॉज द कंपनी वॉज अर्निंग 10-12 रुपीज़
पिछले सालों में एक बैकलॉग बन। सो व्हेन यू थिंक कि एक बैकलॉग इतना क्रिएट हो गया है एंड ऑल दीज अर्निंग्स विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स इन वन गो और इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो आई थिंक मीडियम टर्म इज बेस्ट फॉर पावर सेक्टर। रहमान भाई, आपके ख्याल में व्हाट आर द टॉप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान पावर सेक्टर फॉर 2024? आई थिंक इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये क्रैकडाउन लास्ट 1 से 2 मंथ्स में हुआ है, इसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस जो बिल्ड हो गई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग टुडे इन एनी पावर कंपनी, बी वेरी श्योर कि अगर इस तरह चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होती, दिस क्रैकडाउन फॉर सम रीज़न, इसकी जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल सर्कुलेट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, सो थोड़ा सा ना इसको पेसिमिस्टिकली सोचना चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की सर्कुलेट की इतनी अच्छी नहीं है। बहुत दफ़ा ट्राई हुआ है पहले भी, बट रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ महीनों बाद, कुछ क्वार्टर्स बाद फिर ख़राब हो जाते हैं। सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इन स्टॉक्स में होता था पहले, वो अब ख़त्म हो गया है। दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई आज इन्वेस्ट करेगा और फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो सकता है। ये जो क्रैकडाउन हो रहा है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, और वो पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर एंड देन कंपनीज नेक्स्ट ईयर में लास्ट फ्यू ईयर से डबल डिविडेंड्स देने लग जाए। बट जो हमें हिस्टोरिकल ट्रेंड बताते हैं उसके हिसाब से the margin of safety when investing in these companies has reduced a lot. So मैं आई थिंक आजकल इतनी कंफर्टेबली कुछ रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, एंड आई थिंक देर आर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स एज वेल। जो दो चीज़ें हमने अभी कंसिडर की थी, वन इज द डिविडेंड कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है, एंड द अदर इज इट्स अर्निंग्स। इसके अलावा अगर किसी कंपनी में कोई स्टोरी हो, then it can be a really good investment. But based on the fundamental principles of power sector, जो उसकी earning capacity है, and then they pay that out in terms of dividends, उस point of view से I think margin of safety काफी कम हो पहले से। थैंक यू रहमान भाई। हमने रहमान भाई के साथ 2 स्पेसेस भी की थी, बहुत डिटेल से डिस्कस किया था इस सेक्टर को। मैं उस स्पेसेस की जो ऑडियोज़ हैं उनका लिंक लगा दूँगा इस वीडियो के नीचे। एंड अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस सुनना है रहमान भाई का, you can access those audio discussions via the link I will post in this video's description. Thank you very much, Rehman bhai. Thank you.